Hello everyone, this is Rishabh Jain welcoming you all on our channel SPARSH-FEEL the Success. In this video, we are going to revise grammar. In grammar, specifically, we will be discussing editing part and that will be helpful for you for your examination. Whether you go for class 9th or 10th examination, editing is a very important part of your syllabus of your exam, right? So we are going to cover those things. Before starting, let me tell you a few important things. That in grammar, we do not actually have one particular topic, or it's not like that we will be covering only tense part, or we will be covering only subject verb agreement, we'll be covering prepositions or determiners or something like that. No. Actually, in class 9th and 10th, they actually test you the grammar which you have studied in last 6 to 7 years, like the grammar which you have been studying from class second or class first. They check your knowledge of those things. Like it happens in mathematics, right? Like 2 plus 2 is equals to 4. That was taught to you in class nursery or LKG, I guess. But that still comes in your mathematics part, right? And even the tougher level of that, definitely for sure. In the very same way, in English also, they check your knowledge of your last 2 to 3 years, last 4 to 5 years, what you have studied in your previous classes in grammar. So without wasting much time, let's start with the questions part so that you will be able to get through you will be able to understand the concept very well. All right. So let's begin with that part. All right. So very first question we have, there is error in every line of the passage. So we have been given a passage. We are given a passage over here, which you can see. Mark the error and give the correction for the same. What we have to do is, this is a complete paragraph. The sixth line is one complete paragraph and there is error in every single line. What we have to do is, we have to find error in every single line, right? Now, before moving ahead, let me tell you something. This question was actually asked in this pattern. The question was asked in this pattern. Like it was the complete paragraph. You had one side as error, another side as in correction. So at one side you have to write the error part, what is the mistake in the sense. On the another side you have to mention the correction, what should be the correct part that should come over there. So I have made it in a sequence like 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So you have to check that, right? All right. Let's begin with this part now. The very first of all, like let me tell you how you have to go through the question in examination. The very first thing you have to do is read the complete paragraph. Balu used to sit on front of the National Bank. The farmers which were in need of money want to get loans of the, they will go to him. Balu would help them to fill on the application form. So this is the complete paragraph. Let's begin with line by line. Let's begin with the first line. Balu used to sit on front of. I think you can clearly see this on over here. Generally, we have read in front of. What we have read? In front of. हम लोगों ने क्या पढ़ा है? In previous classes, we have studied in front of. In front of का मतलब होता है सामने की तरफ. तो बालू used to sit in front of the National Bank. तो बालू कहाँ बैठा करते थे? In front of the National Bank. तो हमें फर्स्ट सेंटेंस में एरर क्या मिल गया कि ऑन को करेक्ट करके हमें क्या लिखना पड़ेगा? इन लिखना पड़ेगा. दैट इज व्हाट द एडिटिंग इज. तो हमने एरर फाइंड आउट किया, एरर इज ऑन, और इसका एडिटिंग, इसका जो करेक्शन है दैट इज इन, राइट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. The farmers which were in need of money. The farmers which were in need of money. The farmers which were in need of money. जब मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने रिपीटेडली उसको रीड किया, और रिपीटेडली रीड करने के बाद व्हाट आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे फार्मर्स आ रहा है, who are actually living being, और उन फार्मर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने which का यूज किया हुआ है. Now just think and understand one thing, that which हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, right? Which always comes for non-living things. But farmers are not non-living beings. They are living beings like us, right? And probably few of us may belong to the farmer or farmerly or something like that, right? So here this which will be changing into who, because for living beings we use who, not which, right? तो यहाँ पे आपका जो correction हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? That which will change into who. So let me read both the lines again. Balu used to sit in front of the National Bank, the farmers who were in need of money, right? I hope till here it is clear to all.
Alright, let's begin. Let's continue ahead. The farmers who were in need of money want to get loans of the bank. Now, want to get loans. अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे हमने यूज का यूज किया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वर यूज हुआ हुआ था पैराग्राफ में। व्हाट इट इज टेलिंग टू अस, ये हमें ये बता रहा है कि ये जो बात हम कर रहे हैं, ये बात हम पास्ट की कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे वांट हो सकता है? क्या यहाँ के थर्ड सेंटेंस में वांट आ सकता है? नो, यहाँ पे वांट नहीं आ सकता। इस वांट वांट को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा? दिस वांट विल चेंज इनटू वांटेड। ये वांट किसमें चेंज हो जाएगा? ये वांट जो है वांटेड में चेंज हो जाएगा। दिस want will change into wanted, ठीक है। ये want जो है wanted में चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको थ्री ऑफ द सेंटेंसेस समझ में आए। अगर ये बहुत ज्यादा मैसी हो गया है तो लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और हम जो सब करेक्शन पार्ट है सिर्फ उनको लिख लेते हैं अभी। ऑलराइट, so what are the corrections? The first correction is that, just a second, yes, yes, so this on will change into in, ठीक है। उसके बाद द स्विच विल चेंज इनटू हु, डब्ल्यू एच ओ, एंड द थर्ड वन वी हैव वॉन्ट विल चेंज इनटू वांटेड, ठीक है। आई होप कि ये आपको तीनों समझ में आए हैं। आई होप कि ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। और हमने कॉन्सेप्ट समझा कि फर्स्ट वाले में प्रीपोजिशन का मिस्टेक था, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका मिस्टेक था, फिर यहाँ पे वांट का जो वांटेड हमने किया ये वर्ब का मिस्टेक था, टेंस का मिस्टेक था। नाउ मूविंग अहेड, द फार्मर्स व्हिच वर इन नीड ऑफ मनी वांटेड टू गेट लोन्स ऑफ द बैंक। क्या बैंक के लोन ले, क्या बैंक से लोन लिया जाता है? बैंक से लोन लिया जाता है। तो वांटेड टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक, एग्जैक्टली। ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए? फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द बैंक, ठीक है। दे विल गो टू हिम। नाउ जब हम प्रीवियस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस सेंटेंस को जब सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस यूज, हमने पास्ट का यूज किया। वर्ब हमें पता पड़ा पास्ट का है। वांट का वांटेड हमने किया तो वो भी पास्ट का था। तो क्या यहाँ पे विल आ सकता है इस पैराग्राफ में? नहीं आ सकता। तो ये विल किस में चेंज होगा? इस विल को आपको वुड में चेंज करना पड़ेगा। ये विल जो है किस में चेंज हो जाएगा? वुड में चेंज होगा। ये विल जो है ये आपका वुड में चेंज होना पड़ेगा। इस विल को वुड में चेंज होना पड़ेगा। तो दे वुड गो टू, बालू वुड हेल्प देम टू फिल ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, नहीं टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जैक्टली। यहाँ पे ऑन की जगह क्या आना चाहिए आपका? इन द एप्लीकेशन फॉर्म आना चाहिए। आई होप कि आपको ये सिक्स ऑफ द सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सिर्फ एक बार रीड करना है। यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मिस्टेक्स किस जगह पे है और कहाँ पे आपको मिस्टेक्स है, वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी और वो आप करेक्शन में लिख देंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इनको लिखने का तरीका यू कैन चेक हियर, यू कैन चेक हियर। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ होता है? यहाँ पे एक साइड आपको एरर का कॉलम बनाना होता है और दूसरी तरफ डिटेक्शन का और करेक्शन का आपको कॉलम बनाना होता है। तो एरर जो भी मिस्टेक्स है आप एरर के यहाँ पे लिख देंगे और जो करेक्शन है वो आप करेक्शन की साइड लिख देंगे। जैसे फर्स्ट वाला इन्होंने यहाँ पे कर रखा है आपके लिए, ऑन विल चेंज इनटू इन, सो दैट दे हैव ऑलरेडी done, right? I hope you have understood the first question, right? Now, in the very same way, we have one more question, that is this one. There is error in every line of the passage. Mark the error and give the correction for the same. यहाँ पे हर एक लाइन में क्या है? एरर है। और आपको क्या करना है? इन द वेरी सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन में किया, आपको यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। Margot was worried on the education of his son. अच्छा, हम क्या करने वाले? वी आर गोइंग टू रीड द कंप्लीट पैसेज फर्स्ट। जैसे मैं आपको पहले बताया था, व्हाट इज द प्रोसीजर? लेट रीड द कंप्लीट पैसेज फर्स्ट, राइट? सो वी आर गोइंग टू रीड दैट। Margot was worried on the education of his son. He wants him to pass BA in a college, but his son Balu did not want it to even touch a book. Margot used to visit Balu's school to request her teachers to help him in his studies. All right, चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके आई विल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप एक बार सेल्फ इस क्वेश्चन को ट्राई करें, राइट? ऑल राइट।
तो अगर आई होप कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा, वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। नाउ चेक योर आंसर्स कि आपके कितने आंसर सही हैं और आपका क्या स्कोर आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ऑलराइट, मागो वाज वरीड ऑन द एजुकेशन, नहीं ऑन नहीं आएगा, ऑन की जगह क्या आना चाहिए, अबाउट। ऑन की जगह क्या आएगा यहाँ पे, अबाउट द एजुकेशन ऑफ हिज सन। मागो वाज वरीड अबाउट द एजुकेशन ऑफ हिज सन। मागो वाज वरीड अबाउट द एजुकेशन ऑफ हिज सन। वो उनकी एजुकेशन के लिए क्या थे, वरी थे, चिंतित थे। ही वांट्स हिम टू पास बीए इन ए कॉलेज। ही वांट्स, यहाँ पे हमने वांट्स का यूज किया था, यानी कि पास की बात थी। यहाँ पे अगर वांट्स आ जाएगा तब तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि यहीं पे ही मिस्टेक है। ये वांट्स किसमें चेंज होना चाहिए, दिस वांट्स शुड बी चेंज्ड इनटू वांटेड। ये वांट्स किसमें चेंज होना चाहिए, वांटेड में चेंज होना चाहिए। दिस वांट शुड बी चेंज्ड इनटू वांटेड, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में हम बी टू का यूज करते हैं। ही वांटेड हिम टू पास बीए इन ए कॉलेज, नहीं फ्रॉम अ कॉलेज। ही वांटेड हिम टू पास बीए फ्रॉम अ कॉलेज। ही वांटेड हिम टू पास बीए फ्रॉम अ कॉलेज, ठीक है। बट हिज सन बालू डिड नॉट वांटेड, अच्छा डिड आ रहा है तो ये तो पास्ट टेंस है, यानी कि ये तो सही है। वांटेड, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डिड यूज करते हैं, जब भी आप did यूज करते थे, whenever you use did, after that you never use second form of verb। did के बाद कभी भी second form of verb उसके साथ नहीं आ सकती, क्योंकि अगर did आ रहा है तो उसके साथ V1 का ही यूज होगा। just because did अपने आप में एक second form of verb है and it will take first form of verb with it, right? तो यहाँ पे क्या करेक्शन होगा, बालू did not want, wanted की जगह क्या हो जाएगा, want हो जाएगा। यहाँ पे ed जो है ये हटेगा, तो आप क्या करेंगे, एरर वाले कॉलम में तो आप लिखेंगे वांटेड और करेक्शन वाले पार्ट में आप लिखेंगे वांट। बालू डिड नॉट वांट टू इवन टच अ बुक। मागो यू विजिट बालूज स्कूल। मागो यूज्ड, नॉट यूज, यूज नहीं हो सकता क्योंकि यूज तो प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, वॉज आया था, वांटेड आया था, डिड आ रहा है, तो पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यूज नहीं आकर के यहाँ पे क्या आएगा, यूज्ड आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, यूज। किसका यूज करेंगे, यूज्ड का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। मागो यूज टू विजिट बालूज स्कूल टू रिक्वेस्ट हर टीचर्स टू हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। नाउ अब एक चीज आपको समझें, तो यहाँ पे दो ही लोगों के बारे में बात हो रही है, मागो और उसके बेटे बालू के बारे में। मागो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके लिए यहाँ पे ही यूज हो गया है स्टार्टिंग में। दैट मीन्स इट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे मागो जो है एक मेल पेरेंट है। मेल पेरेंट मतलब कि वो फादर हैं और उनके सन, सन तो ऑफकोर्स ही बात है, मेल ही रहने वाला है। जब दोनों ही कैरेक्टर मेल हैं तो क्या यहाँ पे हर का यूज हो सकता है, जस्ट थिंक। हर यहाँ पे टीचर के लिए यूज नहीं हुआ, हर यहाँ पे टीचर के लिए यूज नहीं हुआ, हर यहाँ पे उनके बेटे के लिए यूज हो रहा है, उनके सन के लिए यूज हो रहा है, जो कि एक मेल मेंबर है। तो रिक्वेस्ट हिज टीचर आएगा, हर टीचर विल बी रॉन्ग। टू रिक्वेस्ट हिज टीचर्स टू हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। आपके पेरेंट्स भी जाते होंगे स्कूल में आपके टीचर से बात के लिए, दैट ही इज नॉट विलिंग टू स्टडी, तो प्लीज आप डांटिए, इनको समझाइए कि ताकि ये अपनी स्टडी पे फोकस कर सके। ऐसा आपके साथ भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में होता होगा, राइट? सो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपने क्वेश्चन जब ट्राई किया था तो आपके आंसर्स इसमें से कितने करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट, राइट? ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। डोंट जस्ट, नो नीड टू गो बैक फ्रॉम द वीडियो बिकॉज वी हैव फ्यू मोर examples and still so many important topics are going to come, right? These, if you think that these are very simple questions, we don't want this level of questions, we want something better, so no need to worry, just have patience because we have some good level of questions also, right? This is nothing but the previous question only. Mago was worried on the education, about the education, but the thing is कि फॉर्मेट ये होता है, हमने उसको प्रॉपर एक तरीके से इसको यूज कर लिया था, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमने उसको लिख लिया था। ऑल राइट, सो नाउ वी हैव एडिट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर आप क्लास 10 के पिछले 2 से 3 सालों का अगर पेपर पैटर्न देखें, to check the paper pattern of last 2 to 3 years, what CBSE is doing, they are giving one liners editing. Before they used to give the complete paragraph, जो अभी किया, CBSE used to give those kind of paragraph. But now what CBSE has done, they have started giving single line questions. Single sentence आपको दे दिया जाएगा and you will have to find the error or the mistake in that particular sentence, right? So we have those kind of questions as well. So let's begin with that part. Okay, moving on to the starting with the very first question of this.
The initiative aims to address the growing passenger and fleet demands among the two neighboring countries. यहाँ पे दो neighboring countries के बारे में बात हो रही है और वहां पे एक इनिशिएटिव लिया है जिसका एम क्या है, टू एड्रेस द ग्रोइंग पैसेंजर एंड फ्लीट डिमांड। पैसेंजर एंड फ्लीट डिमांड, पैसेंजर तो जो ह्यूमन बींग्स ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट, तो वी ट्रेवल इन द पैसेंजर कोच, व्हाइल द फ्लीट इज बेसिकली अपने ट्रेन देखिए जिसमें सिर्फ गुड्स कैरी करे जाते हैं, गुड्स आई मीन टू से सिर्फ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स को कैरी किया जाता है, कुछ सामान को कैरी किया जाता है। उन ट्रेन के जो बॉक्सेस होते हैं, उन ट्रेन के जो कोचेस होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, फ्लीट कहा जाता है, राइट। सो बेसिकली द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से कि जो दो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बीच में पैसेंजर्स की भी डिमांड बढ़ और जो गुड्स ले जाए जाते हैं, जो चीजें ले जाई जाती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउ एडिटिंग क्या होनी चाहिए, इसमें क्या करेक्शन होना, क्या मिस्टेक है, उसका क्या करेक्शन होना चाहिए, दैट वी हैव टू। द इनिशिएटिव एम्स टू एड्रेस द ग्रोइंग पैसेंजर एंड फ्लीट डिमांड अमंग द टू कंट्रीज। अमंग द टू कंट्रीज, टू नेबरिंग कंट्रीज, सिर्फ दो ही कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। और सिर्फ जब दो नाउन के बारे में बात होती है तब अमंग का यूज नहीं होता है। जब दो लोगों के बारे में बात हो रही होती है, जब टू नाउन्स के बारे में बात हो रही होती है, तब हम अमंग का यूज नहीं करते हैं। हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। व्हाट वी यूज, वी यूज बिटवीन। जब भी हम दो कंट्रीज के दो नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तब हमेशा वहां पे बिटवीन यूज होगा, अमंग यूज नहीं होगा, ठीक है। अमंग कब यूज होता है, जब मोर देन टू होती है। यहाँ पे अगर 3, 4, 5 या मोर कंट्रीज होती तब अमंग वुड बी राइट और हम यहाँ पे नो एरर लिख देते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ दो ही कंट्रीज के बारे में बात हुई है, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट टू नेबरिंग कंट्रीज और टू कंट्रीज। सो द करेक्शन विल बी between, यहाँ पे among error, the correction for that will be between. I hope first sentence is clear to you and you have understood the concept behind it, right? जब भी दो कंट्रीज के बारे में बात होगी तो आप दो नाउन के बारे में बात होगी, आप among का नहीं between का यूज करेंगे, ठीक है। सीबीएसई इस पे क्वेश्चन पूछता है बहुत सीधा। Second question, Chetan Bhagat is one of the famous writer of India. Chetan Bhagat is one of the famous writer of India. No, whenever I teach in class, so I have found that there are so many students who do not know about Chetan, and I feel amazed. He, like, at what level we have come that Chetan Bhagat, who is such a famous writer and author of our country, people do not know about him, right? So that is actually telling that we are not willing to read books, right? अगर आप books पढ़ने के interested होते, तो definitely you might have know about him, right? No issues. But Chetan Bhagat एक बहुत ही मस्त writer है हमारे इंडिया के और he is still there. बिकॉज जब मैंने एडिटिंग के लिए क्वेश्चन दिया तो स्टूडेंट स्टार्टेड सेइंग कि सर इसकी वॉज आना चाहिए। देन आई टोल्ड देम कि बेटा ही इज स्टिल अलाइव, तो इज नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता, ही इज स्टिल अलाइव, तो हम इसका ही यूज करेंगे, राइट। ओके, सो लीव ऑल दोस थिंग्स अपार्ट। चेतन भगत इज वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ इंडिया, इज द सेंटेंस फॉर अस और हमारे को इसमें एरर फाइंड आउट करना है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द करेक्शन इन दिस सेंटेंस। वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ इंडिया। अब आप मेरी बात समझिए, हमने क्या कहा कि चेतन भगत एक फेमस राइटर है, ठीक है, लेकिन क्या इंडिया में सिर्फ एक ही फेमस राइटर है? नहीं, देयर आर सो मेनी फेमस राइटर, राइट। शशि थरूर सर इज वन ऑफ दैम, राइट। सुधा मूर्ति मैम, सुधा मूर्ति मैम इज वन ऑफ दैम, राइट। सो देयर आर सो मेनी फेमस राइटर्स, बट व्हाट वी डन इज वी हैव पिक्ड वन ऑफ दैम। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ उसमें से एक को पिक किया है। तो क्या यहाँ पे राइटर होना चाहिए या राइटर्स होना चाहिए? आप एक बार थोड़ा सा लॉजिक खोल के अपने खुद का कॉन्सेप्ट लगाइए कि आप क्या सिर्फ एक में से, अगर आपके पास एक ही चॉकलेट है तो क्या आप उसमें से एक को पिक कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको एक पिक करना है तो उसमें आपके पास में बहुत सारी चॉकलेट्स होनी चाहिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू पिक वन ऑफ देम, राइट। तो चेतन भगत को हमने, जो बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे इंडिया के, उसमें से हमें उनको हमने पिक किया है एंड वी हैव सेड दैट चेतन भगत इज वन ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ इंडिया। राइटर किसमें कन्वर्ट होगा, राइटर राइटर्स में चेंज होगा एंड दैट विल बी द करेक्ट एडिटिंग फॉर दिस सेंटेंस, दैट राइटर विल चेंज इनटू राइटर्स एंड द राइट सेंटेंस विल बी चेतन भगत इज वन ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, moving on to the next one, the idea that tech will free us from drudgery is an attractive narrative, but history tells a different story. लेट्स रीड अगेन, बिकॉज जब भी आपको समझ में ना आए तो आप एक बार सेंटेंस को फिर से रीड करें। द आइडिया दैट tech will free us from drudgery is an attractive narrative,
बट हिस्ट्री टेल अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करें, हिस्ट्री, कैन यू काउंट हिस्ट्री? Is history countable now? No, we cannot count history. We do not have one history, two history, three history. History books are countable. Like we have one history book, and there are so many questions in it, right? So that questions are countable, chapters of history are countable, but history itself is not countable. It is uncountable. And there is a rule in English grammar that whenever we have uncountable subject, we always consider it as a singular subject और उसके साथ singular verb का ही use होता है। तो हमें पता है कि जब भी singular subject होगा तो verb के साथ s या es को लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? History tells a different story. The idea that act with three as drudgery is an attractive narrative, but हिस्ट्री टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो यहाँ पे टेल किसमें चेंज होने वाला है? दिस टेल इज गोइंग टू चेंज इन टेल्स, टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, सो वी हैव टू मोर क्वेश्चंस, one liner type questions. We have two more, right? Paraguay's presidential race could determine the future of Taiwan's presence in South America. I don't think this is very difficult. This is very simple. और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसको समझ लीजिए, बिकॉज सीबीएसई इस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? could, could एक मॉडल वर्ब, may, might, can, could, will, should, must, ought to, ये सारे के सारे क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर मॉडल वर्ब्स, राइट? एक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी मॉडल वर्ब यूज होता है उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्या कहा मैंने? जब भी आपको मॉडल वर्ब दिखे, ऑलवेज चेक कि उसके बाद जो वर्ब यूज हुई है क्या वो V1 है या वो V2 है। अगर वो V2 है तो वहीं पे ही एरर है, आप उसको पकड़ के उसको करेक्शन कर दीजिए, उसको V1 कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप रीड करेंगे सेंटेंस, यू विल फाइंड द सेम एरर। पैराग्वेज प्रेसिडेंशियल रेस कुड डिटरमाइन, नहीं डिटरमाइन नहीं हो सकता, डिटरमाइन का जो डी है इसको हटाना पड़ेगा, मीन इसको आपको V1 बनानी पड़ेगी और सेंटेंस क्या बन जाएगा? पैराग्वेज प्रेसिडेंशियल रेस could determine the future of Taiwan's presence in South America. Hope it is clear to everyone. All right. Moving on to question number 5. Chinese views of India are very complicated, but generally based on a superiority and self-confidence. I hope ये भी आप लोगों को आ गया होगा। Generally based on a superiority and self-confidence. Based on किस पे निर्भर है? वो किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? सुपीरियरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस। बस विल बी बेस्ड ऑन सुपीरियरिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, based on a superiority and self-confidence. I hope you understand the one-liner sentence as well. If yes, then please do let me know in the comment section.